સુરતની અડાજણ સ્થિત ધ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ દ્વારા ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષે જ્યારે એડમિશન શરૂ થયા છે ત્યારે શાળાએ લોકોને ટેકનોલોજીથી અવગત કરવા માટે શાળાની અંદર રોબોટિક તેમજ સોફ્ટવેર દ્વારા એડમિશન પ્રોસેસ શરૂ કરી છે। આ ઉપરાંત શાળામાં બાળકો, વિદ્યાર્થી અને વાલીઓ માટે પણ યુનિટરી GO2 એડ્યુ પ્લસ રોબોટિક સિસ્ટમથી ખૂબ ઝડપી કાર્ય થાય તેથી पर्यावरण પણ બચાવી શકાય અને પેપરલેસ કામ થાય તે હેતુથી શાળામાં રોબોટ દ્વારા કાર્ય કરવામાં આવે છે। વાલીઓ અને મહેમાન દ્વારા રોબોટની મદદથી વિવિધ લેબ, ઓફિસ, ફી કાઉન્ટરની મુલાકાત લેવામાં આવે છે જેથી કરીને માનવ સમય બચાવી શકાય છે અને સારી રીતે મુલાકાત કરાવી શકાય છે। તેમજ વાલી અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પૂછાયેલા તમામ પ્રશ્નોનો ઉત્તર સામે આપે છે જેથી માહિતી સમયસર મળે છે। नमस्कार, मेरा नाम तुषार परमार है। मैं दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल जंगराबाद का प्रिंसिपल हूँ। हमने हमारे यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लिया है। जैसा आप जानते हैं कि आज का ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी और AI का है और इसीलिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने के लिए हमने यूनिटरी रोबोडॉग को परचेज़ किया है। ये ऐसा रोबो है कि जो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा, वो हर तरह के मूवमेंट्स कर सकता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे बच्चों को सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं कि हम आगे कैसे अपने आप हमारे बच्चे रोबोटिक्स में आगे बढ़े, नए नए रोबोट्स डेवलप करें, नई ऊंचाई को छुए, उसी मकसद से हमने इसको परचेज़ किया है। हमारे यहाँ रोबोटिक्स लैब है, वहाँ बच्चे बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन उसको एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। तो जब बच्चा इस रोबो मॉडल को देखेगा, उसकी क्षमताओं को देखेगा, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये सोच आएगी कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हमें इन प्लेस ऑफ परचेजिंग मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कुछ नया क्रिएटिव करें और एजुकेशन को किस नेक्स्ट लेवल लेके जाए। और वो तब पॉसिबल हो सकता है कि बच्चा खुद अपनी थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करे। इसी मोटिव से हमने इस रोबोडॉग को हायर किया है। कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? वैसे तो ये हर क्लास के लिए एक नई चीज़ है। आई थिंक कि ये पहला स्कूल होगा जहाँ पर इस तरह का रोबोडॉग है वो स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हर बच्चा क्यूरियस है। आज हम जैसे क्लास में लेके जाते हैं, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं उसको देखकर। और ये रोबो बहुत सिंपल वाला नहीं है, ये बहुत सारे एक्टिविटी कर सकता है। मतलब इसमें जो मशीन लर्निंग है, उसमें जो कोडिंग है, उसमें जो AI यूज़ किया गया है, जो रोबो है वो रिप्लाई करता है। अगर 5 मिनट तक आप उसको कोई कमांड नहीं देते हैं तो वो रिप्लाई करता है कि आई एम हियर। सो ये सब टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ चुकी है। तो हमें अब जो डेवलप करना है वो उससे अगले लेवल का करना होगा। अगर मैं हमारे भारत का विजन जो हम हैं 2047 है ना, तो अगर उसको वहाँ तक लेके जाना है तो अभी से हमारे बच्चों के अंदर ये सारे स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे। सूरत शहर के शहरीजनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा जो लक्ष्य है 2047 विकसित भारत, उसके लिए हम सभी को आज से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो मुकाम हासिल कर सके। और इसलिए अपने बच्चे को रील्स में देखने के बजाय कुछ क्रिएटिव करे, कुछ क्रिएटिव सोचे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करे, उस पर हमें जोर देना होगा। हेलो, मारू नाम डॉक्टर विरल एम नानावटी है। हूँ ध रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल उगट केनाल रोड जांगीराबाद स्थित स्कूल खाते आचार्य तरीके कार्यरत छूँ। आज बहुत गर्वनी लागणी ए थाय छे कि गुजरातनी सौप्रथम रोबोटिक स्कूल जो होय तो मात्र ने मात्र ध रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल है। सूरतनी पहली एवी स्कूल और गुजरातनी पण पहली एवी स्कूल कि जे रोबोट साथे काम करी रही है। आ रोबोटिक स्कूलनो कन्सेप्ट अमरा ट्रस्टी श्री किशनभाई मांगुकिया और जिग्नेशभाई मांगुकियानो हतो कि बाळकोने रोबोटथी परिचित करो। साथे साथे आ रोबोट स्कूलनी सिक्योरिटी, एज्युकेशननी साथे बीजी विविध प्रवृत्तिमां पण अमारी साथे जोडायेलो रहेशे અને બાળકોને નવી નવી પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે સોંગ, વિવિધ ગેમ આ બધામાં મદદરૂપ થવાનો છે। તો આજે અમે બહુ ગર્વની લાગણી અનુભવીએ છીએ કે એજ્યુકેશનની અંદર સૌથી પહેલો નવો પ્રયાસ માત્ર ટેગ નહીં પણ નામ સાથે કહે છે કે ટેકનોલોજી સાથે સંસ્કાર એટલે ધ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ। સર આનાથી બાળકોને શું ફાયદો થશે? ઓકે, આનાથી જે બાળકોને ફાયદો છે એ ફાયદો એવો છે કે કોઈ બાળકને માની લો કે નાની મોટી સ્કૂલમાં કોઈ ફ્લોર પર જવું છે અને આ બાર હશે તો એમ કહેશે કે ભાઈ મારે ચોથા ફ્લોર પર જવું છે, તો ચોથા ફ્લોર પર આ બાળકને લઈ જશે।
બાળકને લેબ જોવી છે, કોઈ પેરેન્ટ્સ આવ્યું, અનનોન પેરેન્ટ્સ અને એને એવી ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ મારે કેમેસ્ટ્રી લેબ જોવી છે અને આને કહેશું, આપણે કમાન્ડ આપશું કે ભાઈ કેમેસ્ટ્રી લેબમાં જવું છે, તો એ કેમેસ્ટ્રી લેબમાં આપને લઈ જશે. ઇન શોર્ટ, બાળકની સાથે પેરેન્ટ્સની સાથે હ્યુમન તરીકે કામ કરશે અને જે કામ માટે કોઈ વ્યક્તિને રોકવો પડે એ રોકવાની જરૂર નથી, એ રોબોટ એની જાતે જ તમને કરીને આપશે. સુરત શહેરના શહેરીજનોને આપ શું મેસેજ પાઠવશો? શહેરીજનો માટે એક નવો વિચાર છે. એટલું કહી શકીશ કે જો નવા વિચારો લાવી શકતા હોય તો નવા પરીક્ષણો પણ લાવવા જ જોઈએ. અને રોબોટિક હશે તો હવે પછીની જે કલ્પના છે રોબોટ સિવાયની અધૂરી છે. તો આવી કલ્પના સાથે અમારી સ્કૂલની મુલાકાત લો, ચોક્કસથી તમને ગમશે. અને એવું કહેતા અનુભવ થાય છે અને અભિમાન પણ થાય છે કે રોબોટ સાથે કામ કરતા હ્યુમનો તમને અહીંયા ધ રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં જોવા મળશે. મયુર ટેલર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.